Hey everyone, I am Rit and today we are going to explore some of the best places around KC College Colaba campus to eat, explore and experience. So let's get on. We start at Colaba Shopping Center. लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं, लेकिन ये तो तुम्हारे कॉलेज के एकदम बगल में है, तो एक्सप्लोर करना तो बनता ही है। शहर में हूँ मैं तेरे, आके मुझे मिल तो ले, देना ना तू कुछ मगर, आके मेरा दिल तो तू ले जाना शहर में। Now let's get on to something very important. Food. अगर तुम्हें घर की याद आए और बजट भी टाइट हो, रामनाथ स्नैक्स इज योर स्पॉट। यहाँ क्या कुछ नहीं मिलता भाई, उनका मेन्यू देख लो, इतना बड़ा है। डोसा, वड़ा, चाय भी मिलती है और it's just good. It's so good. If you're in for a treat and want something quick, fast and tasty, कॉलेज के पास कॉजवे में यहाँ मैकडॉनल्ड्स भी है। मैकडी और रामनाथ स्नैक्स के थोड़े ही आगे अगर तुम्हें मुगलाई खाने का कुछ मन करे तो ओलंपिया इज योर स्पॉट। भाई ये 100 साल पुरानी रेस्टोरेंट है, एकदम आइकॉनिक। बिरयानी, कबाब, जो मुगलाई खाना बोले, ओलंपिया। अब आते हैं बगदादी पर। तुम्हें पता है ये रेस्टोरेंट कम से कम 100 साल पुराना है। भाई कितना आइकॉनिक है, और ऐसे लगता है जब इधर खाना खाते हैं तो एकदम जैकपॉट ही लग गया, क्योंकि खाने का क्वालिटी तो एकदम टॉप नॉच, उसके ऊपर बिल भी लाइट। नहीं, एक बार तो बगदादी ट्राई करना ही पड़ेगा, और ये एकदम तुम्हारे कॉलेज के बगल में है। शहर में हूँ मैं तेरे, आके मुझे। अगर तुम चाय और पकोड़े के शौकीन हो तो एक प्रेमाची चाह पे जरूर आना। We are standing right now in front of the National Gallery of Modern Art. If you are up for some inspiration, तो जरूर यहाँ आना, because every time they have a new exhibition and I see the newer kinds of modern art, I get inspired every time and मेरे दिमाग में तो इतने सारे ideas आ जाते हैं, it always helps. So surely do check it out. They're open from Tuesday to Sunday. We are at Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, which was previously known as the Prince of Wales Museum. Just look at it. It's so beautiful. And अंदर जाके तुम्हें तो information and knowledge का भंडार मिल जाएगा, because here this museum it captures everything about India from prehistoric times till modern India. You can find everything here. The beauty, the greenery and knowledge. If you want a package of culture and history, इधर तो तुम्हें एक बार आना ही चाहिए। अब देखो आर्ट की बात हो रही है और आर्ट गैलरीज की बात हो रही है, तो जहांगीर तो मेंशन करना ही पड़ेगा, because this is one of my most favorite art galleries. हर हफ्ते there are new exhibitions from different artists and each one of them is ought to be seen. Talking about needing inspirations and finding it in art galleries, I think it's very important to talk about the Jahangir street artists. They sit right outside the Jahangir Art Gallery, displaying the beautiful artworks. You know, you can get so many ideas, so many inspirations, and just in general be able to, you know, feel good. That is the whole point of art, to make you feel something. And here you can see that all of this art truly makes you feel something. Bookworms, this is your heaven. It's Kitab Khana, and every time I come here, मुझे पता ही नहीं चलता when does time go by. It's just amazing.
It's and इधर अंदर कॉफी भी मिलती है, so that's also really cool. But if you are into buying second-hand books or books at a cheaper rate, एकदम किताबखाने के opposite है, Flora Fountain is also bookstores. You can get books for the money. Sometimes you can even find books that are unique. Some really cool books that might be, like second-hand buying or third-hand. I found a book which was like pretty old from the 50s. So you must go to see it. Here are the books that I bought today. I get that it's a little far away from, our college, but you can catch Kitab Khana on the way while you're going toward Churchgate. देखो अभी कल्चर की बात हो गई, खाने की बात हो गई. Let's get on to something classic. Regal Cinema. See, it's grand. Honestly, its vibe is unbeatable. Sometimes you just gotta take a break from Netflix and chill with something retro, like Regal Cinema. Folks, that's about it for our tour in and around Colaba. See, until then, like, share, comment, and subscribe to Nod, a media club. See you next time.